नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है एडवोकेट त्रिभुवन कौशिक और आप लोग देख रहे हैं मेरा वीडियो ब्लॉग। दोस्तों, आज का ये जो वीडियो ब्लॉग है ये समर्पित है उन लॉयर्स को, न्यू लॉ ग्रेजुएट्स को और उन वकीलों को जो लोग मीडिया लॉ की प्रैक्टिस करना चाहते हैं और साथ ही साथ आम व्यूअर्स जो जानना चाहते हैं मीडिया और एंटरटेनमेंट लॉ के बारे में। तो दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ मीडिया एंड एंटरटेनमेंट लॉ की प्रैक्टिस क्या है हिंदुस्तान में और आप उसको किस हिसाब से इस्टेब्लिश कर सकते हैं। तो अगर अभी तक आप लोगों ने मेरा सबसे पहले यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा। मेरी सोशल मीडिया डिटेल्स यहाँ पर हैं, इसके मार्फत आप मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन दबाने से मेरे जो बाकी वीडियो ब्लॉग्स भी हैं वो भी आप तक पहुँचेंगे जब भी मैं वीडियो ब्लॉग्स बनाऊँगा। और काफ़ी वीडियो ब्लॉग्स मैंने यूट्यूब पे बनाए हैं। अब तो हज़ारों लोगों की फैमिली है और लाखों लोगों ने हमारे चैनल को देखा है, तो आप हमारी लाइब्रेरी में जाके भी हमारे और वीडियो ब्लॉग्स को देख सकते हैं। हमने कोशिश की है कि जो ज़रूरी जानकारी है आप तक आराम और मैं कहूँ कि एक अच्छे तरीके से एक शुद्ध सरल भाषा में आप तक पहुँचे। तो आइए आज का जो मेरा ये वीडियो ब्लॉग है इसको शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ऐसा है कि मीडिया एंड एंटरटेनमेंट प्रैक्टिस यानी कि मीडिया एंड एंटरटेनमेंट लॉ प्रैक्टिस जो है ये भी न्यू बर्ड लॉयर्स या फिर जो लॉयर्स ऑलरेडी प्रैक्टिस में हैं और वो अगर न्यू प्रैक्टिस एरियाज अपने लिए एक्सप्लोर कर रहे हैं तो उनके लिए काफ़ी एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। मीडिया एंड एंटरटेनमेंट की जो प्रैक्टिस है, जैसा कि आप नाम से ही समझ रहे हैं, इसका मतलब है कि हम बात करने जा रहे हैं जो मीडिया एक इंडस्ट्री है, वो जो इंडस्ट्री है वो किस तरीके से फंक्शन करती है और उसमें लॉ की क्या रिक्वायरमेंट है और आप उसमें जो है किस हिसाब से अपनी सर्विसेज आप दे सकते हैं। तो सबसे पहले आप ये समझ लीजिएगा कि इस वीडियो ब्लॉग में मैं जो वेरियस एक्ट्स हैं उनको डिटेल में आपको नहीं पढ़ाने जा रहा हूँ। हाँ, कुछ जो स्टैट्यूट्स हैं उनके बारे में मैं आप लोगों के साथ जिक्र करूँगा इस वीडियो ब्लॉग के दौरान। लेकिन मैं सरसरी तौर पे आपको समझाने की कोशिश करूंगा साधारण शब्दों में कि किस हिसाब से आप जो है मीडिया एंड एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में अपना एक कैरियर खोज सकते हैं। तो दोस्तों, जो लोग काम करना चाहते हैं वकील साहब इस इंडस्ट्री में और जो नए वकील बन रहे हैं वो लोग चाहते हैं कि मीडिया और एंटरटेनमेंट की ये जो शोबिज़ का जो बिज़नेस है, अगर आप उसमें एक सेलिब्रिटी लॉयर अगर आप बनना चाहते हैं, अगर आप अपनी सर्विसेज केटर करना चाहते हैं, तो आपको समझना होगा कि सबसे पहले ये जो इंडस्ट्री है इसमें प्रैक्टिस करने की क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। तो अब समझते हैं कि अगर कोई सेलिब्रिटी है या कोई मीडिया और एंटरटेनमेंट फर्म है तो उनकी रिक्वायरमेंट्स क्या हो सकती हैं। जैसा कि बाकी ब्रांचेस ऑफ लॉ की जब आप प्रैक्टिस करते हैं वहाँ पे होता है that you have a legal problem that you had to solve. Similarly, in media and entertainment business also, you need to figure out some common problems that you'll be catering to. So for example, if you are working for a firm which is into media and entertainment, they may have a requirement related to their commercial contracts. They may have a requirement related to their some sort of a litigation. They may have a requirement which may be related to their intellectual property rights. So अगर आप इसको समझना चाहें तो इसके साथ साथ अगर आप देखें commonly that every feature film requires a certification. So a certification and compliances related requirement which are normally there in any other corporation because Companies Act duly applies here. So basically जब आप मीडिया एंड एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में काम करेंगे तो आप को ऑर्गेनाइजेशनल कॉन्ट्रैक्ट्स, compliances of the organizations, individual compliances, आपको ये समझना पड़ेगा कि you'll have to be on your toes when it comes to these aspects of law practice what I've just discussed. लेकिन मीडिया एंड एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में सबसे जो इम्पॉर्टेंट requisite है that is how you communicate with people. I'm not saying that when you're doing practices for various branches of laws like criminal, civil, arbitration or anything like that, you don't require that expertise there because एक वकील को जो है वाक्यपटु और he should be a conversationalist. He should be able to say things in a simple and a plain language just to make sure that आप जो
कॉट के आप एक फ्रेंड हैं जहाँ पे आपको कॉट को असेस करना है वो आप करते हैं, लेकिन ये जो इंडस्ट्री है इसमें आप प्राइमरली देखेंगे कि लिटिगेशन नॉर्मली इज सीन टू बी अ लास्ट रिसॉर्ट, क्योंकि मीडिया एंड एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री प्राइमरली कॉन्टेक्ट्स के बेसिस पे काम करती है. अगर आप की इमेज सही नहीं है in this profession, so to say, even if you are employed in this line of business by some or the other way, then you will have issues. So therefore ये जो इंडस्ट्री है मीडिया एंड एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, इसमें अगर आप देखेंगे कि अब क्योंकि वेरियस वेस्टर्न स्टूडियोज आर आल्सो टेकन इंटरेस्ट in what exactly we do in Bollywood, Hollywood, Tollywood or any northern industry, so to say, or individual artists, तो आपको प्राइमरली काम करना पड़ता है उनके कॉन्ट्रैक्ट्स से रिलेटेड. साथ ही साथ आप यहाँ पे पर्सनल लॉज की भी प्रैक्टिस करते हैं, क्योंकि जब आप किसी सेलिब्रिटी के साथ काम कर रहे हैं, सो दे मे कम अक्रॉस विद सम और द अदर इश्यूज, सो टू से दैट यू विल हैव टू लुक आफ्टर. आपने देखा होगा पिछले काफ़ी वक्त में कि काफ़ी सारे जो मीडिया जो सेलिब्रिटीज़ होते हैं, अमूमन वो क्योंकि फेमस पर्सनालिटीज़ होते हैं तो हमेशा मीडिया में रहते हैं, पर आप हाल फिलहाल में गाहे बगाहे they've started to become very active, and they say very many things on social media etc., by which you not only look after just the contractual or the commercial aspect of practice here, you'll also have to defend them in courts, which comes to a criminal branch of it. So जो हाल फिलहाल की जो media practice है, that can be a criminal for a celebrity versus a studio versus a company, plus this can also be contractual, because obviously there are very many contracts involved. Based on my little experience, because I have been catering to some clients, I have seen that this industry is not per se that organized, and here things are done based on how things have been there in practice, so to say. But yes, since you talk to people, those who come from a creative branch of it, at times they accept what is supposed to be changed as per law and latest guidelines. So that is why, like I said at the beginning, you not only need to know what statute is there, you also need to know what are the guidelines by the various industries. So for example, Information and Broadcasting Ministry has given various guidelines related to how social media is supposed to be conducted, regulated. So अब ये एक नई चीज़ है जिसके बारे में भी आपको जो है ध्यान रखने की आवश्यकता है. You need to make sure that things are there on your fingertips when it comes to giving consultation. तो दोस्तों, जहाँ तक मीडिया एंड एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की बात है, ये एक हमेशा से चकाचौंध वाली दुनिया रही है. अगर आप अपने आप को सेलिब्रिटी लॉयर बनाना चाहते हैं मीडिया एंड एंटरटेनमेंट बिजनेस में, तो आपको ध्यान रखना होगा कि आप सबसे पहले और compliances, contracts, as well as you need to make sure that since you'll be working on personal capacity also with the organization versus individuals, so make sure that you should be somebody who is navigation savvy, should be able to get quick answers. You need to make sure that here you can't say in a colonial way, the way some of my lawyer friends say, those who still make sure even post pandemic that technology is a little hurdle, though they are very good trial lawyers. So आप जो है आपको जो है open रहना पड़ेगा for new learning, new challenges. Likewise, you're open in the other branches practice. Here you have to meet people more and more, those who are from entertainment industry. So since you have that sort of a clientele, you'll have to cater to their requisites, because whatever is being said by them, whenever you do any sort of transaction there, people know you more than if you're trying to do a small if you're trying to do a practice of any other branch of law. For example, if you do a rent control act in Delhi, where you may be making money, but people may not know you until unless you've delivered primarily into that line of business. On the other hand, let's say if you work for some very known celebrity who's said some blah blah stuff on social media, you're trying to defend that person in criminal court, you'll get a media attention and very many other things. So yes, as we say, entertainment laws in India, when it comes to practice of it for media and entertainment, you need to make sure that you take it as opportunity if you get some clients to work with.
make sure that you see what's there and what's a global trend like, because in India you not only work with just the organizations, there are individual artists also. Those have started to come up based on YouTube revolution in India. But you see there are so many celebrities, those were just made primarily by the social media. So yeah, keep a track on how things are happening in this industry. In my suggestion, it's a good to go industry. Make sure that you do study relevant laws, for example censorship, for example contracts, for example criminal versus civil, whatever is the requisite. But the basic knowledge of contract versus how you conduct yourself and how good you are at negotiation, that can fetch you a client. ओके दोस्तों, तो ये मेरा एक छोटा सा वीडियो ब्लॉग है एंटरटेनमेंट मीडिया इंडस्ट्री में आप कैसे प्रैक्टिस स्टैब्लिश कर सकते हैं. आई होप दिस वाज हेल्पफुल टू न्यू बट लॉयर्स एंड फॉर अ जेनेरिक practice, if you are a first generation lawyer, you should see the link in my this video blog, wherein I have written a book which is related to first generation lawyers. I understand you may not have your forefathers in this industry, but yes, I'm right there to help you based on my almost decades practice. I'm able to fetch in few do's and don'ts that can help you to establish a good practice in this profession. All right, so that's pretty much in this video blog. People, stay healthy and safe. ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद. नमस्कार.